Okay, so what we now need to do is once we have posted the entries from the journal to the ledger, the next step is to balance the accounts. Whatever ledger accounts you have prepared, they need to be closed properly. Okay, and what do we mean by balancing of accounts? That I'll let you know. Once we'll start with the cash account and we'll start posting the entries as per this question under the cash account. Okay, so you people will help me with this. I'll just call out your names and then you can tell me where which entry needs to be put as in the proper chronology as per the date. Okay. Okay, yes, Gaurav, we'll start with you. गौरव यस मैम। हाँ बेटा पहली एंट्री बताओ मुझे कौन सी डेट को हुई है मैम 1 को। ओके एंड द एंट्री वाज मैम टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट व्हाट वाज द अमाउंट 5 लाख। ओके so this is the first entry everyone 5 lakh to capital account okay next Aman yes next entry on which date fast Ayan by that time you tell me where we need to put the next entry मैम क्रेडिट। क्रेडिट में कौन सी डेट को मैम 1 को। जवान को ही है and the entry is मैम कैश अकाउंट। क्या एंट्री है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री है बाय मैम बाय मतलब मैम बाय कैश अकाउंट। तो मैम अमाउंट है 5 लाख। आप कैपिटल अकाउंट की एंट्री बोल रहे हो मुझे नो मैम नो यस। कैश अकाउंट की एंट्रीज की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हम पहले कैश अकाउंट की ही एंट्रीज देख रहे हैं सारी तो आप मुझे कैश अकाउंट में बताओ ओके नेक्स्ट मैम। एंट्री कौन सी है मैम 8 को। ओके और टू में है या बाय में मैम टू कैश अकाउंट। एट्थ को है क्या एंट्री है कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे है मैम यस। क्या 30,000 क्या लिखेंगे टू टू कैश अकाउंट। बेटा कैश अकाउंट में दोबारा आप कैश अकाउंट यूज कर ही नहीं सकते टर्म अच्छा मैम तो मैम टू परचेज अकाउंट से कैश अकाउंट क्या है मैम। मैम बाय नहीं आएगा। बाय आएगा बेटा फिर आपने परचेजेस करी है जर्नल एंट्री क्या थी आपकी परचेजेस टू कैश यस अयान मैम हाँ जनरल एंट्री थी मैम गुड सोल्ड हुई है। तो गुड बॉट करे मैम। हाँ तो जर्नल एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यस मैम। so which means cash account has been credited ओके ओके मैम। so the entry यस will मैम। be paid on the credit side by purchases अच्छा what was the बाय amount परचेज अकाउंट 30,000। okay by purchase account 30,000 okay then Gautam next entry बट उससे पहले सेकंड वाले में भी हुआ है ना। कौन सी एंट्री हुई है बता दो आप मुझे मैम okay सेकंड one एंट्री by में। one Gautam mute Ma'am, yourself there's ma'am, some ma'am, yeah Gautam ma'am, sales in debit side, sales account it is on 12, which date which date 12 January, 12 January. नो बट आई थिंक इससे पहले 8 से पहले भी कोई एंट्री हुई है Yes, ma'am, कैश ma'am, bank account 2 January, 4 सेकेंड lakh, जनवरी debit side, credit side. credit side okay I am writing here now you people can please make sure that you are writing in proper order date wise so by bank account 2nd January. Yes, ma'am. okay 4 Gautam lakh. what 4 lakh Yes, ma'am. okay okay next
कार्तिक, जैन 12 की बतानी है। सेकंड के बाद सीधा एट्थ की एंट्री है बेटा, बीच में कोई एंट्री नहीं है कैश की। मैम है 5th की हाँ, है। बैंक की है विकास आप मैम। बता दो तब तक, फिफ्थ की एंट्री बताओ मुझे। बाय परचेज अकाउंट 50K। ओके, 5 नहीं मैम, 6th है। फिफ्थ है, 5/1, 5 जनवरी, बाय बाय परचेज परचेज। मैम 5th में तो मैम क्रेडिट से लिया था ना। या मैम 5 नहीं है मैम, 6th है। अच्छा, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है। ऑन फिफ्थ आई जस्ट चेक द क्वेश्चन, वेट मैम आई। 6th में चेक से लिया है। तो मैं चेक से 8th के बाद डायरेक्ट 12th जनवरी को है। ठीक यस है मैम, फिर। 12th को है सीधा। ठीक है, ओके देन कार्तिक टेल मी द एंट्री फॉर 12th। 12th में मैम 2 सेल्स 10,000। Okay, so it was cash account debit to sales account. That was the यस मैम। journal entry, and the यस, amount is 10,000। 10,000. Okay. Okay, Vikas, have you understood? नो मैम, कैन यू प्लीज वन? The journal entry which you are talking about, purchases, those were on credit basis. तो कैश की तो डीलिंग ही नहीं थी उसमें। आप एक बारी मुझे जर्नल वो ट्रांजैक्शन बताओ कौन सी थी। मैम फिफ्थ की थी, बॉट गुड्स फ्रॉम एस खान। फॉर 50,000। So no cash payment has been made in this case, because later on you are making a payment to S Khan, I think on the date, I'll just let you know, on 24th. जब तक मेंशन नहीं है कि कैश परचेज है, you assume it to be a credit purchase. So the journal entry would be purchases account debit to S Khan account. मैम इन द 5th। Bought मैम goods from S Khan, yeah. ओके। ठीक है, तो उसमें कैश पेमेंट का नहीं मेंशन, सो इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज अ क्रेडिट परचेज। ओके, तो मैम इसका योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम यस, इसका फाइनल आप एंट्री करेंगे इसकी? एक आएगी परचेजेस अकाउंट में, हाँ जी। डेबिट साइड पे टू एस हाँ खान, हाँ और जी। एस खान के क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस। ओके ओके। ओके, okay, and then the dates are mentioned. Yes, someone asked about the dates. आर्यमन, द डेट्स आर मेंशन, जो आपको ऑर्डर दिया हुआ है उसी में डेट्स मेंशनड है, क्वेश्चन में मेंशन है ऑल द डेट्स। ओके कार्तिकेय, यू टेल मी द नेक्स्ट एंट्री आफ्टर 12th। मैम 17 जनवरी बाय स्टेशनरी 500। ओके, 17 जनवरी बाय स्टेशनरी अकाउंट 500। मैम ओके, ओके देन आफ्टर दैट, yes, Ashutosh, you have not done the question, that is what you were saying. Deepti, Ishan, yes Deepti, next entry fast। मैम कैश अकाउंट की हाँ जी, बाय कैश एस अकाउंट खान। बाय एस खान, क्या डेट है बेटा? मैम 21 को मैम टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट आएगा। टू 21 जॉन की एंट्री है, यस टू मैम। टू जॉनसन जॉनसन अकाउंट। यस मैम तो 12,000। जॉनसन अकाउंट एक्सक्यूज मी 12,000। मैम। यस सूरज, यस इट्स सूरज, ऑल राइट। अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट एंट्री, यस मंजीत। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री बताओ बेटा, कौन सी डेट की है कैश अकाउंट में? बाय एस खान 24। 24th को है, यस मैम। बाय एस खान अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट? 20,000। 20,000। Okay, then Kamal, have you solved the question? यस मैम। हाँ बेटा, नेक्स्ट एंट्री बताओ।
मैम 27 जन की है डेबिट में कि क्रेडिट में? मैम बाय वेजिस अकाउंट Okay, 27/1 by wages account. What is the amount? द अमाउंट इज 2000 मैम 2000. Okay. And then, Harshita, you tell me the next entry. Mayank, Yes, ma'am. Ma'am, yes, 30 Jan by bank account. 30th Jan by bank account. कितनी अमाउंट है? Ma'am, 5,000. ओके, बस इधर एंट्रीज खत्म है कि और हैं अभी? Ma'am, खत्म. ओके, सो आई एक और है मैम, 31 की भी है एक और है मैम, ओके ओके 31 वन जनवरी। वन मैम आर्यमन ड्राइंग वो से बैंक की है. वो बैंक की है, मैम. अच्छा वो बैंक की है ड्राइंग्स वाली, so Yes, which ma'am. entry is left? Yes, one. Aryaman, tell me नो which मैम, Ma'am, the question is cash withdrawn from the bank for personal use. yeah, so that will be through the bank account. So, ma'am, but in the cash account we will not mention that drawing account No, because it is that mentioned. cash is already deposited in bank. Okay, and that is drawings to bank. The journal entry will be drawings account debit to bank account. So there is no dealing in cash, so we will not make the entry through cash account. Because we have submitted the money earlier in the bank, that's why. Bank, yes, and that money has been withdrawn for personal use. ओके, तो कैश बैलेंस से तो वो ऑलरेडी अमाउंट कम हो चुकी है, तो दोबारा आप उसकी एंट्री नहीं करोगे. Okay, ma'am. ओके ओके, सो आई होप ones who have solved know that this is how the ledger for cash had to be prepared. Now we come to the next part, which is how we close the ledger accounts. We close the ledger accounts by balancing the accounts. Now you can very clearly see in the question that the total on the credit side is higher than the total on the debit side. Okay, so one of you please total. This is 4 lakh 30, 70. 5 lakh 5 lakh how much? 22,000. 5 lakh 22,000 is the total coming on the credit side. Yes? Yes, ma'am. Okay, you are allowed to use, yes, one by one, yes. Debit side it is 5 lakh 20. Okay, debit, okay, 5 lakh is the amount there. Okay, so debit is more than the credit side. I'm sorry. Ma'am, here is 4 lakh 57,500. Okay, just let me make the space for balancing entry. So this is debit side has a 5 lakh figure. So I missed that. So the total on the debit side is more than the total on the credit side. What I was also saying is that you people are allowed the use of simple calculators in your main exam. Okay. So I think 12th में आपको allowed नहीं होता, the ones who have appeared for accounts paper. In your first semester exams in accounts, you are allowed use of simple calculators. So you just total up the sides. What we find here is that the total on the debit side total is greater than the credit side total, and as you have pointed out, the debit side total is 5,22,000, and one of you was telling me 4 lakh कितना है क्रेडिट साइड का टोटल? 4 lakh. यस, आर्यमन 4 लाख 4 lakh 57,500. मैम बैलेंसिंग फिगर 64,500 आ रही है इसकी. ठीक है, आप एक बार ये वो भी बता दो मुझे, इसका टोटल कितना है? 4,70,000 कितना है? आर्यमन आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है. विकास, यू वर टेलिंग दी टोटल. मैम 4 Okay, lakh 57 4 lakh 57,500. Okay. So I hope all of you have got these values.
the difference between the two values is coming to 64,500. What we need to do is that we have to make the total of both the sides equal. Okay. So what I do is I write here 5,22,000. Higher जो balance है वो आपका total बनता है of both the debit and credit side, and then to balance the credit side, what I write on the last day of the month. Okay, I will write by balance carried down. This is what is the terminology used, by balance carried down. Okay, this is the balance in the cash account. Okay, balancing figure for the cash account. Now, when debit balance is greater than credit balance, we say that the cash account has a debit balance. Okay, so I have given the figure of balancing figure on the credit side, which is the difference of the total of both the sides, and then this value comes down on the first day of the next period. Okay, so since here we are preparing the ledger accounts on monthly basis, the next time period is 1st of Feb. Okay, so just let me complete, then I'll answer your queries. By balance carried down को opposite side हम ले जाते हैं on the first day of the next time period. बाय जब ऑपोजिट साइड पे आएगा तो वो 2 बन जाएगा, बैलेंस रिमेन्स बैलेंस, एंड कैरिड डाउन becomes brought down. Okay, so this value now appears on the debit side at the start of the next time period as 64,500, balance brought down from the previous time period. Okay, and that is why we say cash account has a debit balance. Okay, now the questions. Yes, Suraj, you were asking something. Yes, ma'am. Hello. क्या पूछ रहे थे? हाँ बेटा पूछो. Yes, ma'am. If debit side and credit side becomes equal, then what will then be the there's no balancing figure. what, ma'am? अगर डेबिट और क्रेडिट ऑलरेडी इक्वल हैं तो कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं. या मैम बट वेल मतलब इसके बाद आप बताएं ना बैलेंस कैरिड आउट फिर फर्दर क्या चीज होगा, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. क्या बैलेंस? अगर मतलब यहाँ पे आप जैसे बताएं ना कि बैलेंस जो कैरिड आउट है, मतलब फिर फर्दर इसको कैसे यूज करेंगे मैम? कहाँ पे यूज करेंगे इसको? एक बार ही ब्रॉट डाउन कर लिया आपने 1 फरवरी को, उसके बाद अब इसको ट्रायल बैलेंस में यूज करेंगे. ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. वो लास्ट मतलब स्टेप होगा हमारा इस पूरी साइकिल का जो अभी हम कर रहे हैं. ओके, यस वंदन. मैम एक डाउट था मैम. हाँ जी पूछो. मैम जैसे मैम हमारा 64,500 बैलेंस आ गया, हाँ जी. तो मैम इसे मैम यहाँ मैम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि मैम वो कम है, तो इसलिए मैम बराबर करने के लिए दोनों साइड. हाँ जी पहले क्रेडिट साइड लिखेंगे. और मैम आपने हमें दो जगह लिखा है मैम, 31 जनवरी को और 1 फरवरी को, तो मैम ये दो मैम कैसे करा है मैम वो बता दो एक बार. कैसे करा है? पहले आपने इक्वल करनी है जब साइड, वो लास्ट डे ऑफ दैट मंथ में कर रहे हो आप. ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ जनवरी इज 31st जनवरी. आई नीड टू क्लोज माई अकाउंट्स ऑन 31st जनवरी. Okay, so I wrote the balancing figure on the credit side since we have seen that debit total was more than the credit total. Okay, now this account has been closed on 31st January. Next month is the next time period. Okay, now again there will be transactions in cash in the month of February also.
यस तो जो मैम। पिछली बार का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस बार का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। यस मैम। और मैम एक ठीक और है, डाउट था मैम। और ये ऑपोजिट साइड पे आता है। यस मैम। ठीक है, तो वो इस वजह से यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ, और मैम डाउट पूछो। मैम अगर इस केस में अगर मैम बाय चांस अगर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है डेबिट हाँ से, हाँ हाँ। तो मैम डेबिट में हम ये सेम चीज लिख देते बाय बैलेंस CD, मैम उतना ही नहीं, अमाउंट। टू टू बैलेंस सीडी होता ना, फिर डेबिट में जो भी लिखोगे वो टू से स्टार्ट होगा। यस मैम। तो मैम टू CD का बैलेंस, है। हाँ, टू बैलेंस सीडी होता और फिर 1 फरवरी को आ जाता बाय बैलेंस बीडी। मैम CD क्या होता है मैम? मैम ये बता दो एक कैरिड बार। डाउन, कैरिड डाउन, जब बैलेंसिंग करते हैं तो कैरिड डाउन होता है। जब बैलेंस पिछले पीरियड से ला के नोट करते हैं तो ब्रॉड डाउन होता है, बीडी। यस मैम, आ गया मैम, थैंक यू मैम। ओके, यस, एनी अदर डाउट? These science students especially, I encourage you people to ask more questions because you are doing this for the first time. Should I take up one more account? Ayan, मैम yes. मैम Yes, ये one. हाँ, फेब्रुवरी वाला में तो हम लिखेंगे नहीं ना अभी? नहीं नहीं, लिखोगे आप लिखना हमेशा पड़ेगा? क्लोज करके। हाँ, बिल्कुल लिखना है, हमेशा लिखना है। ओके मैम। ओके, yes. Should I prepare one more account? I'll take up a small अकाउंट जिसमें एक ही एंट्री हो। स्टेशनरी वाला अकाउंट ले लेते हैं। स्टेशनरी में आई बिलीव देयर इज ओनली वन एंट्री, तो उसमें दोबारा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बट मैम, फर्नीचर में भी एक ही है। फर्नीचर कोई भी एक ले लेते हैं। हाँ जी, मैम अगर हमने स्टेशनरी को एक्सपेंस लिया तो? स्टेशनरी को एक्सपेंस नहीं है बेटा। स्टेशनरी तो क्या आपने कौन से अकाउंट से करा है उसके पास? नहीं मैम, मैंने तो उसको एक्सपेंस ले लिया क्योंकि स्टेशनरी को एक्सपेंस नहीं लेते ज्यादातर। हाँ हाँ, एक्सपेंस लेते हैं, पर अकाउंट का नाम क्या लिया आपने? मैम अकाउंट तो सीधा कैश में डाल दिया ना कि स्टेशनरी, और आगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, उसका लेजर थोड़ा ना बनेगा। अच्छा, आपने उसका वो बैलेंसिंग वाला एस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हो आप। यस मैम। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शनल। एक्चुअली दैट इज व्हाट वी स्टडी आल्सो बाय रूल कि कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स को ही बैलेंस करते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स डायरेक्ट उसमें डालते हैं। बट यहाँ पे अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्लोज करवा रही हूँ सारे अकाउंट्स, क्योंकि मुझे ट्रायल बैलेंस में दिखाना है। ओके मैम। ठीक है, so it is up to you. You are clear with that concept, you can take it directly. Okay, for the rest of the class I am preparing the stationery account also. मैम Please have a look. Yes. मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस? स्टेशनरी का अलग से नहीं बनाते तो फिर इसकी एंट्री कहाँ पे हम डालते हैं? नहीं, स्टेशनरी का अलग से ही बनाते हैं, आप उस बात से कंफ्यूज मत हो, वो कुछ और बात है। ठीक है, आप स्टेशनरी का करें हमने एंट्री, स्टेशनरी टू कैश। यस मैम, किया है कौन सी डेट पे थी? मैम। 17 17th one. Okay, and the amount was how much? कैश अकाउंट 500। 500. Okay, so class, please pay attention. We'll do the balancing for one more account here. Okay, so we are basically closing the stationery account here. So stationery account में एक entry है to cash account and this is with rupees 500. Okay, there's no other entry in this account. I need to close this account. For the commerce students, since you people might be clear कि ये expenses हम directly P&L में transfer कर सकते हैं, you can move in that way. For all other students, we'll close this account for ease of your understanding. Again, total of both sides should be 500, which is the higher of the डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे 31 जनवरी को मैं लिख दूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, एंड दिस वैल्यू विल बी 500. दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. Balancing figure comes on the opposite side on the first day of the next time period. So by becomes 2, balance remains balance, and carried down becomes brought down 500. So I have closed my stationery account. Okay, this is how you will be closing all the accounts. So now you people have all the
ledger accounts with you. Start closing them. Okay, take 5 minutes. डेबिट क्रेडिट का टोटल करना है, जो शॉर्टर है वहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, और नेक्स्ट डेट जो 1 फरवरी की डेट पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन सारे अकाउंट्स का कैलकुलेट करो. फास्ट आई गिव यू 5 minutes. there's any doubt, I'm here, I'll answer the doubt. Start मैम closing all the accounts. Yes, Vandan. मैम बैलेंस अपोजिट साइड करते हैं. हाँ, बैलेंस. मैम बैलेंस अपोजिट साइड मैम ब्रॉट डाउन हाँ करते हैं. हाँ, ब्रॉट डाउन वाला ऑपोजिट साइड आएगा. यस मैम. और मैम वो मैम हमें बस लिखना होता है मैम, उसे आगे भी कैलकुलेट कुछ करना नहीं, होता है उससे मैम. आगे कुछ नहीं करना, अभी आपने इतना ही करना. ठीक है. यस मैम. यस मैम. मैम हाँ जी, बोलो यान. मैम जो मैम आपने लिखा था डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट, फिर वो इसकी वैल्यूज मैम वो लिखना है. कहाँ पे बेटा? मैम जो आपने पिछले स्लाइड में लिखा था डेबिट ग्रेटर देन नहीं क्रेडिट. नहीं नहीं नहीं, वो आपको समझाने के लिए था, आपने सिर्फ ऐसे अकाउंट्स क्लोज करने हैं. ओके मैम. मैम. हाँ जी, बोलो. मैम, कैन यू प्लीज 5th Jan again? The entry for 5th Jan. Yes, ma'am. Okay, I'll come to the question because I'll have to look at the question. Okay. So this was the question because 5th January ko you have bought goods from S Khan Yes, ma'am. for 50,000. Yes, ma'am. Okay. Nowhere is it mentioned that the amount has been paid in cash or by check. Yes, ma'am. Okay, so again, if you look at the further entries, on 24th you find that paid S Khan 20,000 on account. Yes, इसका ma'am. मतलब पहले कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी एस खान की, जो हमने बाद में पे करी है. Yes, So ma'am. when cash is not mentioned, check is not mentioned, it is assumed that the purchase is on credit basis. Okay. Okay, जब क्रेडिट पे आपने परचेजेस करी हैं, तो आपने लाइबिलिटी ऐड करी अपने बिजनेस में, क्रेडिटर ऐड करा, Mm-hmm. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, Yes, ma'am. एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग डेबिट होगा. Mm. कैश बिजनेस से बाहर नहीं गया, Mm-hmm. बिजनेस में एक क्रेडिटर ऐड हुआ है. Yes, ma'am. क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं. Yes, ma'am. So purchases to S Khan. This will be the journal entry. तो मैम होगी, एक तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट. डेबिट नहीं, परचेजेस यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो हाँ. परचेज अकाउंट के डेबिट हाँ. में 2S खान आ गया. 2S खान आ गया. हाँ जी. और एस खान क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. Yes, ma'am. तो एस खान के क्रेडिट साइड पे Mm-hmm. बाय परचेजेस, Yes, ma'am. आ गया. ऑपोजिट वाला अकाउंट आता है. ठीक आ है. गया. ओके. मैम यस. मैम एंट्रीज बैलेंस ही क्यों करनी पड़ती है?
बेटा फिर ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं कि हमने सारे अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करे हैं या नहीं, क्योंकि वो सब बैलेंस फिर ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की एक्यूरेसी चेक हो जाती है, और फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो बनती है वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही बनती है। तो जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि ये सब स्टेप्स हैं आपकी अकाउंटिंग साइकिल के, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलीज कर रहे हो, यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल हो और करेक्ट हो। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। ओके। So class, is the balancing done for all the accounts? Put a yes or no in the chat box so that we can proceed. The balancing complete? No? No, ma'am. Okay, take 2-3 minutes more. By that time, the ones who have completed, I'll just prepare the format for trial balance. So you can note it down.
We can take this as CD. Okay, so what you people can do is you can complete the closing of all the accounts, but first understand what is the purpose for which we are closing and bringing the balancing. Please stop writing and pay attention. The last step which we'll be doing at this point is preparation of trial balance. तो जर्नल से स्टार्ट करा, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करे, उनको क्लोज करा और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बेसिकली अ स्टेटमेंट टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी of the balances of all the ledger accounts. Okay, तो लेजर अकाउंट जो भी आपने क्लोज करे हैं उन सबके बैलेंस ब्रॉड डाउन हम यहाँ पर लाते हैं और चेक करते हैं कि डेबिट बैलेंसेस शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंसेस. So what I said, that we bring only the balance brought down here. This means कि आप यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. पहला अकाउंट हमने प्रिपेयर करा था कैश अकाउंट. ओके, लेजर फोलियो विल बी दी पेज नंबर on which this account has been prepared. तो कैश अकाउंट आप देखते हो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे है? डेबिट साइड पे. और क्या अमाउंट है? 64,500. तो आपका कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 64,500. वो अपने ट्रायल बैलेंस में आप लिख दोगे. ओके, so you are picking only the balance brought down. You check on which side is it appearing and therein you mention that balance in the trial balance. Okay, similarly for stationery account. For stationery account also I believe there was a balance brought down only. Okay, so say here the next account is stationery account. Again, what do you see? Where is the balance brought down? I find it on the debit side. So under the debit amount column, I will write 500. ऐसे करके आप सारे अकाउंट्स को क्लोज करोगे. सारे अकाउंट्स यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लिखोगे और उनका अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में लिखोगे. ओके, how many total accounts have you people prepared? Can anyone tell me what is the total number of accounts? मैम 8 हैं टोटल. नहीं मैम, स्टेशनरी को गिनोगे तो 9. 11. मैम 12. 11 है मैम. 11 मैम 11 एक्सपेंसेस के सारे. मैम 12. Okay, please check then. All of you should have 12 accounts. At the end, the debit and credit balance of all the 12 accounts should tally. Okay, so this I'll leave here. You can complete this question, prepare the trial balance and